anyone who's dealing with children. So not only judges and magistrates, but lawyers and whoever, doctors, whoever is dealing with a child, we have to know कि वो वाले बच्चे जिनसे हम डील कर रहे हैं, जिनमें अब्यूज हो गया है या जिनमें ट्रॉमा हुआ है, उनको हम ये वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं कि नहीं. तो नंबर 1 is the realization about the trauma. It happens with this child. You have to know it. Being a judge, you have to know it too. Recognizing the signs of trauma and then responding to the trauma by developing the system and re-traumatizing prevention. That is the most important part. We will talk about it. So how we create a trauma-informed approach in the judiciary, right? तो एक बात तो मैं आपको बताऊं, let me tell you, हालांकि मैं तो किसी ऐसी चीज के लिए देखी, लेकिन courtroom appearances are very intimidating, even for adults. It is just an intimidating experience, right? So for a child who is already traumatized, it puts a lot of psychological pressure on them and a lot of psychological impact on them. So the judge is a key person to kind of keep a balance. एक तो जाहिर है आपको अपना प्रोसेस करना है लॉ वाला, लेकिन you have to make sure कि और ज्यादा इमोशनल काम ना हो. Emotionally the child is safe, right? So and the number 1 thing is you have to prevent trauma. हमारे पास सबसे ज्यादा ये होता है कि विक्टिम का नाम और विक्टिम की सारी स्टोरी दूसरे दिन सोशल मीडिया में आ जाती है and then it comes on the media and everything. So that is actually illegal. The victim's name cannot come on the media and वो this is देखो इसका law भी आ गया है बड़ा क्या and so that is another thing. And then again ensuring कि mental health services उस बच्चे को मिल रही है, we will ensure. And then when you send them home, you make sure कि आप उसको कहाँ भेज रहे हैं. Is the family safe for the child? या the shelter would be a safer place. So इसके बारे में थोड़ा सा और इसके बाद बात करेंगे. And then you have to be a part of the child protection system. जैसे मैंने कहा integrated child protection system, और लोगों ने भी जो बात की है, in Pakistan we do not have a child protection system really. थोड़ी सी इधर होती है, थोड़ा उधर होता है, थोड़ा इधर होता है. Mainly a child protection system should have a coordinated system जिसमें कि सब लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें पुलिस एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, MLOs एंड मजिस्ट्रेट, एंड इट शुड जस्ट बी अ ऑटोमेटिक सिस्टम. अभी क्या होता है कि हमें फोन कॉल्स करनी पड़ती है, हमें सबको बोलना पड़ता है अच्छा अब आप ये काम कर दें, और जब तक हम प्रेशराइज ना करें नथिंग हैपेंस. ये तो और दूसरे वाले जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो तो फिर वहीं रह जाते हैं. Now, child protection system, as you all know, these are the laws, the policies which are made to prevent and to respond to these cases of child abuse, right? And it is, of course, run by the government along with different authorities. So the stakeholders are, of course, the Child Protection Authority, police, law enforcement, new magistrates, judges, and MLOs, and then NGOs and citizens who are working on it. So different types of child abuse which require protection. Living in Pakistan, we've been talking about it. Unfortunately, there are cases, abuse is happening everywhere, and it is we see that in our daily lives. We come out for work and we see a child begging. We see children working at homes. We see children, doing child labor. So all this, apart from those 4 kinds of child abuse, child domestic labor, beggary, child marriage, out of school children, trafficking. अब हम आते हैं understanding trauma in the environment and how we see it, how we doctors see it. So they can, अगर कोई trauma हुआ है किसी बच्चे को, so they can present with anxiety, they can present with depression, they can present with PTSD. ये तो आपने सुना होगा ये वाली terminology, post traumatic stress disorder. What happens in this is कि इन बच्चों में जो trauma जो हुआ है, intrusive thoughts आती रहती हैं. It is like a flashback. All of a sudden something triggers them and they start
scenario, the incident, what happened at that time. So it kind of comes back to them again and again. What they start doing is they try to avoid anything which is linked to that trauma. For people, they try to avoid that place. And then ongoing support orders in maybe when you are writing your decisions, please make sure क्योंकि आगे वाले को कोई भी काम करते नहीं है जब तक कि आपका ऑर्डर ना हो. So there was a girl, again child marriage case, who was sent to Child Protection Authority. And वहाँ जो है चूंकि मैं इन्वॉल्व थी उस केस में, तो मैं रोज कॉल करती थी उसको साइकोलॉजिस्ट ने देखा या नहीं देखा. उसको एक हफ्ता गुजर गया, उसको साइकोलॉजिस्ट ने नहीं देखा. आई मीन कैन यू थिंक ऑफ दैट कि उसको अभी तक साइकोलॉजिस्ट, जब मैंने प्रेशराइज किया तो फिर उन्होंने अपना कोई साइकोलॉजिस्ट बुलाया और उसको फिर दिखाया. तो ये वाली चीज अगर मिनिस्ट्री की लिख देना कि दे हैव टू बी फॉलो अप्स के लिए दे हैव टू सी अ मेंटल हेल्थ पर्सन, हेल्थ केयर, और फिर उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म हम शेल्टर में भेजेंगे तो एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. उसका भी हमें कुछ तरीका करना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसमें बड़ी बेसिक सी पढ़ाई होती है. बच्चे पता नहीं कितने कितने साल रह रहे हैं वहाँ, लेकिन उनकी कोई तालीम नहीं होती. तो हमें वी हैव टू डू समथिंग. अगर आप लोग किसी अपने ऑर्डर्स में लिख दें तो शायद वो उन्हें लगे कि अच्छा हम आगे हम पढ़ा सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं. वो कहते हैं हमें जी जज का ऑर्डर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते. दिस वॉज हर आंसर एवरी टाइम जब भी मैं पूछती थी कि कोई साइकोलॉजिस्ट ने देखा है. तो दिस इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड कोर्ट्स की तो बात होती रही है, तो वो आई थिंक आई डोंट हैव टू, लेकिन इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड जो मैंने भी सुना था कि जुवेनाइल कोर्ट्स जो है वो बन गए 2-3, लेकिन आई गेस वो फंक्शनल नहीं है या वो कोई वो नहीं हो रहे. लेकिन फिजिकल इंटेग्रिटी ऑफ द चाइल्ड और द पर्सन्स अराउंड हिम. So and it is usually it causes horror, terror, and a state of helplessness at that time. So this is described as trauma for any, even adult. It is not like that. What is included in childhood trauma? So.